organized by Government Engineering College Bilaspur. I am overjoyed to take this opportunity to introduce our resource person of this session, Group Captain Retired Y. Srinivas. He took voluntary retirement from Indian Air Force in July 2012. He is born and brought up at Bilaspur, Chhattisgarh, presently working as project manager in Madras Security Printers, a Bilaspur Smart City Project. And he is a motivational speaker, life transformation coach, and he is a neuro-linguistic programming certified master practitioner. He has 23 years of experience in defense and 9 years experience in corporate. He obtained his BE degree in electrical engineering and MS in consultancy management from BITS Pilani. He worked as CEO in Skyland Facility Management and Consultant Private Limited. Also worked as a mentor in Atal Tinkering Lab, Government Multipurpose School Bilaspur, and in Bilaspur Incubation Center. He was awarded Commendation of Air Officer Commanding in Chief Commendation by Chief of Air Staff. He will be discussing on topic Integrated Waste Management of a Smart City. Without further ado, I welcome Group Captain Retired Y. Srinivas. Please, sir. Yeah, thank you, ma'am. Thanks for that nice Overall, introduction. he is our alumnus also. Indrani? Yes, sir. Yes, sir. He is our alumnus of 1988 batch. Yeah. Okay. Yes. Dr. Amal Agarwal's batch. Yeah. Thank you. Yeah, thank you very much for the nice introduction. And at the outset, let me thank Chawla sir and my friend ML Agarwal, Dr. ML Agarwal, who is my coursemate also, batchmate also. And of course, the whole of the staff, and for considering me for this particular post and for considering me worth giving a talk on this important topic of integrated waste management system in the smart cities. And before I start, let me just give she has given a brief introduction, but let me also tell you as to what is my journey all about. I did my engineering in 88 in electrical from Government Engineering College. 88 August I passed out, and in 89 March I joined the Indian Air Force as a technical officer and served the country for 23 years. And took a voluntary retirement in the year 2012. And since then, I've been working in the corporate sector. Well, I'm on a mission actually to transform lives of people and who can lead a happy, healthy, and a beautiful life using simple but very effective NLP and HUNA techniques. I'm an NLP master practitioner, and that I want to do it for Bilaspur and Chhattisgarh. And I'm there on my mission for the last 2 to 3 years and doing my bit to whatever I can do. So to be frank, after leaving Bilaspur in 1989, I came back to Bilaspur after 30 years for serving the country. And then in the year 2019, I came back to Bilaspur. And since then, I've been working for Bilaspur PwC, that is a PricewaterhouseCoopers. I was the team leader for Bilaspur Smart City Project. I worked there for almost 1.5 years, and then I switched over to another company for looking after. Presently, I'm working as a project manager for the Madras Security Printers, who are undertaking the project of integrated waste management system. So I'm also associated with Bilaspur Smart City Project and also the present IWMS project, which I'm going to discuss in details with you all. So, but the reason why I'm telling this all is not that there are few myths which I have broken. आप लोग जो मेरे viewers हैं, बहुत सारे students भी होंगे. So तो कुछ myths हैं, कुछ beliefs हैं जिसको मैंने तोड़ा है और हम सब तोड़ सकते हैं. अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं. ये बोला जाता है कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपकी एज ज्यादा हो गया और आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. ये एक मिथ है, बिकॉज मैं जब रिटायरमेंट लिया था, आई वाज एट 48 and at the age of 51 I started a business and the business is still running. और मेरा बैकग्राउंड भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही है. फादर एक रेलवेज में थे, राइट, एंड मेरे पास भी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट लेकिन यस, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और बिजनेस अभी भी चल रही है. सो वो एक मिथ तोड़ा है. दूसरा एक मिथ है कि 40 साल के बाद आपको एक जॉब नहीं मिलता, बिकॉज जॉब मिलना मुश्किल हो जाए, आपकी एज ज्यादा हो जाती है,
तो मैंने 48 ईयर्स के बाद आज जो मैं जॉब कर रही हूँ मेरा 5th जॉब है। तो ये भी एक बिलीफ है हमारे दिमाग में जो सोसाइटी हमें बोलती है, बट ये भी गलत है, राइट। और 50 साल के बाद लोग बोलते हैं रिलैक्स करना चाहिए, अब बहुत हमने जॉब कर लिया, अब रिलैक्स करना चाहिए, अब मौका है रिलैक्स करने का। बट मैंने अपनी जिंदगी 50 ईयर्स के बाद, 48 के बाद ही स्टार्ट किया है। And today I am 58. I am doing what I could not do during my defense service because मेरा जो youth है, मेन youth जो 25 to 45, 46 years के एज है, वो मैंने देश की सेवा में लगाया। तो मैंने जब रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि अब सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा। So I'm doing my work now. And frankly speaking, 2017 में मैंने एक वर्कशॉप लिया था यहाँ पे लकीराम अग्रवाल इंस्टीट्यूट में, और मैंने वहाँ पे मैंने एक क्लेम कर दिया था कि जस्ट मेरे सबकॉन्शियस माइंड से निकल गया कि मुझे बिलासपुर को ट्रांसफॉर्म करना है टियर 3 से टियर 2 सिटी। सो आई डोंट नो व्हाई, बट दैट टाइम बिलासपुर स्मार्ट सिटी भी नहीं आया था और मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई वाज नॉट इन बिलासपुर, आई वाज इन पुणे, बट ये जस्ट मेरे इसमें से निकल गया था। और उसके बाद आज अगर देखो तो 2021 में मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन तो किया है टुवर्ड्स माय गोल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लेम कि मैं बिलासपुर को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। मैं उसके बाद बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हुआ। उसके बाद अब मैं एक IWMS जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बिलासपुर के लिए, उसमें एसोसिएट हुआ। आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इंक्यूबेशन सेंटर एंड ऑल्सो द डिजिटल लाइब्रेरी। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन है बिलासपुर के इस प्रोग्रेस की तरफ से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप मन में कुछ ठान लो कि हाँ मुझे ये करना है, और कहीं आप लिख लो, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको वो जरूर मिलेगा। अगर आप आज देखोगे तो आपने पास्ट में जो आपने बारे में सोचा था आज वो वहीं पे होगा, उससे आगे नहीं हो। तो आज आप जो सोचोगे वही आपका आगे होगा। तो ये छोटा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जस्ट टू मोटिवेट द यूथ ऑफ द माय कॉलेज, माय ओन कॉलेज। And of course, I am an author also. एक मेरा e-book है Children Are Value Treasures. Is a collection of stories, especially for the children. और each story gives a moral. और बच्चों को सोचने में मजबूर कर देता है एक स्टोरी। And this is dedicated a gift from grandparents and parents. तो इसका लिंक है यहाँ पे। And also मेरा एक नेक्स्ट बुक आने वाला है जैसे मैराथन द क्रूशियल लैब। Everybody's life is a marathon. अगर आप अपनी जिंदगी देखोगे तो right from the day you were born till today, it's a marathon, and you have so many ups and downs, and everybody's runs their own marathon. So this book is all about my life and my marathon, where I have shared my experiences, and this is going to come soon. Well, with that, let me come to the topic, and I'll try to make the topic as simple as possible. बहुत इसको simple रखने की कोशिश करूंगा because I know कि आपका already एक session हो चुका है और you must be that tired, so let me keep it as simple as possible. And जो मेरा flow होगा वो होगा a idea, what is the idea behind the mission Smart City जो Government of India ने बनाया, what is the basic idea and क्या challenges हैं इसके implementation में, जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना तो क्या चैलेंजेस आते हैं, और एट बिलासपुर स्मार्ट सिटी अबाउट बिलासपुर, चूंकि मैंने बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ 1.5 साल तक, तो मुझे पता है। तो बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बारे में एक ब्रॉड ओवरव्यू में दूंगा ताकि आप लोग भी एक बर्ड्स ओवरव्यू आ जाए कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है क्या। क्योंकि आप लोग सुने तो जरूर होंगे कि हाँ बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स हुआ है, कितनी प्रगति हुई है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुए हैं, ये शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा। तो आई विल ट्राई टू शेयर अ ब्रॉड बर्ड्स ओवरव्यू अबाउट इट एंड उसकी स्टेटस आज क्या है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का स्टेटस आज क्या है ये मैं बताऊंगा। और फाइनली जाके मैं IWMS प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड आई विल डिस्कस द IWMS प्रोजेक्ट। सो दिस विल बी माय फ्लो एंड जो भी मैं बात करने वाला हूँ, whatever I am going to speak, I am going to speak with respect to Bilaspur Smart City Project because I am very, very closely associated with it and also I have studied 1 or 2 smart cities. So based on that, I am going to draw my inferences. हो सकता है कि मैं गलत हूँ, I might not be correct, but these are my own personal views. So I am speaking about my own personal experiences with one particular city. Okay. I hope everybody is able to hear me. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, because I'm not able to see anything. I'm just seeing my slide and just one window, small window. Okay. ये few questions हैं कि why
a smart city is required? Is it necessary in India? भारत ऐसे ही इकोनॉमिकली फॉरवर्ड नहीं है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, क्या इंडिया में स्मार्ट सिटी की जरूरत है क्या? और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है? जैसे इंडिया में इतने सारे सिटीज है, उसमें से केवल 100 सिटीज क्यों सेलेक्ट हुए हैं स्मार्ट सिटी के लिए? और स्टेटस आज जैसे 2015 में ये स्टार्ट हुआ था, तो 2021 में इसकी स्टेटस क्या है? सो आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस जो हमारे जो बाकी जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं जो मंडे से बात कर रहे हैं और आगे भी बात करेंगे, ये सब क्वेश्चंस शायद वो आंसर करेंगे और आंसर कर भी चुके होंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दीज क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच any of the speakers will be answering, so I'm not going to waste time on that. And these are the questions already answered or maybe will be answered by the esteemed and knowledgeable speakers who are going to come. But let's understand कि smart city का concept क्या है, why a smart city is required, why the smart city is been planned. So this is basically to keep pace with the technology. अगर आप Western countries को देखोगे तो Western countries has a steady planned growth as far as the technology is concerned. But if you see India is a diverse country with huge population, with a huge divide between urban और rural का जो division है, जो gap है, ये बहुत ज्यादा है. So टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा फास्ट डेवलप हो रहा है, उसके साथ पेस रखना मुश्किल हो रहा है. और अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ पेस में नहीं रहेंगे, अगर इंडिया इज नॉट इन पेस विद द टेक्नोलॉजी, सो इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस. सो बेसिकली टू ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ and improve the quality of life of the people by enabling the local area development and harnessing the technology. This is the basic idea, to improve the standard of living of the people, and a common man should also be able to access everything and anything. So that is the basic idea, to keep pace with the technology and also to elevate tier 3 and tier 2 cities. जिनको पता नहीं होगा तो उनके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे हमारे टियर 1 सिटीज आर ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा एंड चेन्नई. दिस आर द टियर 1 सिटीज. जो बाकी जो सिटीज है जैसे पुणे है, नागपुर है, these are all the tier 2 cities जो next to tier 1 cities आते हैं. And the tier 3 cities are like Bilaspur, Raipur, Rourkela, Jamshedpur. ये tier 3 cities हैं. Now अगर हम tier 3 cities को अपने own pace पे छोड़ दें ताकि वो develop हो, तो it will take lot of time, maybe 10 years or 15 years. So to elevate tier 3 cities at par with tier 2 and tier 1 cities, ये smart city project has come as a boon to these people, because the government is supporting the technology, they are implementing the latest technology, and they are also implementing in a planned way. So इससे क्या होगा कि tier 3 cities जो है इनको एक elevation मिलेगा, उनकी जो present infrastructure है वहां से लेकर एक नया लेवल के लिए. So इसी के लिए मैं बोलता हूं कि smart city has come as a boon to tier 3 cities. They can elevate their position very fast within 3 to 4 years with the support both financially and otherwise also from the government, central government and the state government, right? And also to reduce the rural urban divide. कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो रूरल और अर्बन का डिवीजन बहुत ज्यादा है. The gap between the rural and the urban is quite high. Now when we come, अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ बिलासपुर में अगर आप देखोगे जब स्मार्ट सिटी बिलासपुर बनता है तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी आएगा, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन फैसिलिटीज को यूज करेंगे और उनकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे. हो सकता है कि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस रूरल अर्बन डिवाइड विल बी reduced when we have tier 3 cities as the smart cities. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो राइट नाउ अभी हमारे पास जो है बिलासपुर के, we will know that we have one incubation center and also one digital library. Now these are the iconic, these are the iconic assets of Bilaspur, because in the incubation center अगर आपके पास कोई भी creative idea है जो marketable है, जो viable है
as viable hai in the market, which can earn some money, which is valuable for the society, then you can go to the incubation center and present your idea, and they will do the rest of the thing. The digital library, you have the digital library, you have all the facilities, the ambience there is so good, and if you can harness the power of this digital library, the students who are coming from outside can also be used. So that's how somehow हम rural और urban divide को कम करते हैं अगर tier 3 cities में smart cities का implementation होता है. And of course, the quality of life will improve because the basic reason of the smart city concept is to improve the quality of life of a person. Now, he should be, any common man should be able to access all the facilities which are there through the use of technology, right? So this is the quality of life will also improve. And okay, so these are few of the things which I feel as with reference to Bilaspur Smart City, the concept of smart city. Anybody, any doubt? Can ask me a question, or else we can take the questions at the end. Coming to, let me take a बहुत peculiar situation. Sorry? We will take questions at the end, sir. Sure. Yeah, that's nice. Yes. Okay, so let me take a very vague situation. Suppose एक young लड़का है, a young boy है, and उसको अगर हम एक valuable gift देते हैं. Suppose a gift is called a Ferrari. I hope सबको पता था Ferrari क्या होता है, and especially the youth. Now, if this is a gift given to him by surprise, suppose उसकी birthday है, तो उसका reaction क्या होगा? And if especially अगर वो छोटा सा लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और उसको कार्स का बहुत शौक हो, अगर उसको एक बर्थडे पे एक फरारी का कीज उसको गिफ्ट में दे तो उसका रिएक्शन क्या होगा? His reaction will be, he will be blank, because initially जब उसका कीज और फरारी को वो देखेगा तो he will be blank, he will be surprised, he will be quite astonished as to क्या उसके हाथ में आ गया, because he already started loving he loves the fast cars or the sports cars, and now he has got a gift of a Ferrari. अब थोड़ा दिन होगा तो then he will slowly, this particular surprise or the astonishment will sink into him. Then he will start realizing that हाँ मुझे ये कार मिला है, अब मुझे use करना पड़ेगा, and then slowly he will start enjoying driving that particular car, and then he will slowly understand what is the efficiency, what are the capabilities, how to use the car, Ferrari car, and he have enjoyed this. Well, so this is a situation. So this is one situation where the boy is actually उसको बहुत अच्छा लगता है fast cars का. ऐसे भी situation हो सकता है कि उस बच्चे को कार का कोई इंटरेस्ट ना हो, अगर उसको हम फरारी दे देते, कीज दे देते, तो उसको कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा. So there are two situations. Okay, now take this situation. अब मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूं बिटवीन अ फरारी गिफ्ट वर्सेस अ स्मार्ट सिटी गिफ्ट. मैंने पहले भी आपको बताया कि टियर 3 सिटीज को स्मार्ट सिटी एक गिफ्ट के रूप में आया है, राइट? एंड नाउ अगर टियर 3 सिटीज को एक गिफ्ट में आया स्मार्ट सिटी, तो रिएक्शन ऐसा हुआ 2015-2016 में कि वो शॉक्ड हो गए, वो सरप्राइज्ड हो गए. उन्होंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि एक स्मार्ट सिटी जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट है वो हमारे पास आया है, और इसकी हम प्लानिंग कैसे करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या करेंगे, कैसे स्ट्रेटेजी होगी, बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कम इन. सो ऑल दिस हैज कम एज अ शॉक टू द टियर 3 cities, right? Most of them. And when this shock has come, slowly they try to understand. Like the Ferrari आने के बाद थोड़े दिन के बाद वो बच्चे ने उसकी चलाने को सीखा, उसकी मेंटेनेंस सीखा, उसका पावर को हार्नेस किया. उसी प्रकार से tier 3 cities slowly they started implementing the project, trying to understand the strategy, trying to understand the harness of the capabilities of the technology which is coming, etc. So this analogy, you must be feeling it's out of context. Possible है कि out of context है, but मैंने सोचा कि अगर मैं इस context को, इस analogy को लेके आऊं तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि एक Ferrari for a person who cannot even dream of it, a tier 3 city which cannot dream of so many projects of so much value being given as a gift will be the same, and that's exactly what has happened. Now,
चैलेंजेस क्या है? जब एक टियर 3 सिटी को एक फरारी दिया गया है, मतलब फरारी इन द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फरारी इन द फॉर्म ऑफ अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दिया गया है, तो इस चैलेंजेस हैं कि इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मैं बताऊंगा आगे चलकर कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं एक स्मार्ट सिटी में। रोड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, redevelopment of parks होते हैं. So there are so many infrastructure projects which are actually state of the art in the sense जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना है टू कीप राइट। और उसके अलावा इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिकॉज आपको एक साथ 70-72 प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, इसकी वैल्यू इतना ज्यादा है, तो हम इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करें? बिकॉज हमारे पास टाइम पीरियड है, प्लस हमारे पास ऊपर है सेंटर एंड द स्टेट, दे आर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग क्या हमारा प्रोग्रेस क्या। एवरी मंथ दे हैव टू गिव अ फीडबैक कि कितने टेंडर्स हुए, कितने वर्क ऑर्डर्स इश्यू हुए, कितना पैसा खर्चा हुआ। सो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा ताकि हम इन लेटेस्ट प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म करें, राइट। और उसके बाद एक बार आपने प्रोजेक्ट्स बना दिया, आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, तो उसके बाद सस्टेनेबिलिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर बिलासपुर की हम बात करें तो बिलासपुर में जो डिजिटल लाइब्रेरी बन गया है, इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है, तो अब इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, इसकी स्टैंडर्ड को इतना ही कैसे मेंटेन करेंगे, इसको और भी हम इसकी जो पावर को हम कैसे यूज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं, आई थिंक 2-4 दिनों में हमारा एक और ई पाठशाला एक प्रोजेक्ट है विच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, विच इज ऑलरेडी कंप्लीट, विच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, एंड दिस इज the pilot project have been implemented in 2 schools. One is Devkinandan School, then the other is Government Multipurpose School. Now इस pilot project में ई पाठशाला is so powerful कि इसमें आपके 9th से लेकर 12th तक आपकी जो भी एग्जामिनेशन है इसके सब मॉडल क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स है, यू कैन गो एंड गिव द टेस्ट। ऑल्सो दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी, आप जाके वहां पे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो, आप देख सकते हो कि आपकी स्कोर कितना है। जैसे अभी आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आप मॉडल क्वेश्चन पेपर लेते हो और आंसर करते हो, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे को कितने मार्क्स मिले, मेरा कैसा ये रहा। बट दिस samples they can actually, they will, the moment you give the question answers, आपको पता लगेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको कितना परसेंटेज मिला, आपको कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ नहीं करना है। सो ये एक बहुत पावरफुल टूल है ई पाठशाला। अगर हम सोचो सस्टेनेबिलिटी की जब मैं बात करता हूं, ये 2 स्कूल्स को हटाकर इसको अगर हम बिलासपुर के सभी स्कूल्स प्लस आसपास के गांव में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर हम ई पाठशाला के प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर पाए तो फिर कितना पावरफुल टूल होगा स्टूडेंट्स के लिए जिनको पहले एक्सेसिबिलिटी ही नहीं था, अब ये एक्सेसिबिलिटी आ गया जस्ट एट द टिप ऑफ द फिंगर्स। सो सस्टेनेबिलिटी इज अ मेजर thing which is a challenge again for the government to how to spread these projects which are there. Okay, now the next biggest challenge is forward looking. देखिए आज हम जो कुछ भी करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, वी हैव टू थिंक ऑफ 3 years 4 years डाउन द लाइन, अहेड ऑफ इट, नॉट टुडे। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज नहीं करना है। आज आप टेक्नोलॉजी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप ये सोच के करो कि आज से 4 से 5 साल बाद हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, हम इसको आज से 4 से 5 साल के बाद कैसे यूज कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग। अगर आप अपने लाइफ में भी देखो, आज आप जहां पर भी हो, आपने जो भी डिसीजन 3 से 4 साल पहले लिया था, आज आप एग्जैक्टली वहीं पे हो, और आज आप जो डिसीजन लोगे आप उसी के निर्भर पे आप आज से 4 से 5 साल बाद रहोगे। सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन always when we implement a project, be it an infrastructure project or be it a IT project, we have to implement the project thinking of 3 years 4 years ahead of us, not today. So we have to, this is again a biggest challenge, that we are implementing a project forward looking, and that's what exactly the smart city concept is all about. It says to implement the project, use the latest technology and think
way forward 3 years, 4 years down the line. So these are few of the challenges. And coming to the mission development strategy, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दो प्रकार के डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, राइट। सो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में बेसिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रीडेवलपमेंट कोई होगा, रिट्रोफिटिंग होगा, इन द सेंस अगर कोई पार्क्स हैं या कोई तालाब्स हैं तो उनका रिट्रोफिटिंग होगा, कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे सोलर एनर्जी है या फिर ग्रीन पावर अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके वो प्रोजेक्ट्स होंगे। सो दीज आर ऑल द एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और हर सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया लिया गया है, पूरे सिटी को नहीं लिया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया को लिया जाता है और उस एरिया को डेवलप करते हैं। तो बिलासपुर के केस में कौन सा एरिया लिया मैं आगे बताऊंगा। एंड उस एरिया को डेवलप करता है, उस एरिया में ये सब रीडेवलपमेंट होगा, रिट्रोफिटिंग होगा एंड ग्रीन फील्ड्स होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट होता है पैन सिटी प्रोजेक्ट, ये पूरे सिटी में होता है और बेसिकली ये आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक IWMS हो या फिर CCTV प्रोजेक्ट्स हो या फिर कोई और प्रोजेक्ट्स जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, राइट। सो there are two types of projects in a smart city project. One is called the area development, ABD project बोलते हैं हम, दूसरा होता है कि pan city development. Okay. Now there are in the initial phases they have selected 100 cities and there were 5,151 projects which were identified and the total worth is 205,018 crore of investment of these 100 cities. This was the total investment budget for the first 100 cities. Now, these are the 100 cities which have been selected for the smart city project, and also Bilaspur was also selected in the third phase actually. And the selection process भी एक criteria के through होता है. We had to give a presentation, then we had to say as to why we have to be selected. Depending upon our presentation and our power and the present existing situation, they selected. Bilaspur got selected in October 2017, I think in the third round of the smart city. So Bilaspur is also one of these 100 smart cities. That's how it has come. Now, current status of the mission, it started in 2015 and it was supposed to be completed by 2020, 5 years ka tha, but somehow it got extended. And agar aap dekhoge to physically 6000 projects जो है आपको tender stage में है, जहाँ पे tendering हो चुका है. And this was I think this was data which was available in July 2021. अभी September हो गया. Maybe there will be some changes. And work order stage पे 5000 projects हैं और आपके works जो complete हो गए 2898 projects हैं. Now coming to the financials, tender stage पे 1.81 crore billion INR का expenditure हो चुका है. And when you work order stage 1498, and all these are rupees in billions, right? And this is the state financial state for all 100 cities consolidated. And this is the data which has been collected from the Smart City Project Mission website. So it is authentic data. It's not, nothing has been cooked up. It's authentic data which has been downloaded from there. Now coming to Bilaspur, let's see, these are the projects under tender stage. These are the different cities where the projects, and if you see, Chhattisgarh is somewhere here on the 6th position under tender stage. So from the top, it is on the 6th position, not bad at all, the way Chhattisgarh is doing, and Bilaspur is also part of it. So as far as tendering of the projects is concerned, Chhattisgarh is doing a fairly good job at being at the 6th position. And coming to the completion of the projects, also Chhattisgarh is in the upper half only. It's around 12th or 13th position. So it's also not bad. So number of projects completed in Chhattisgarh is in the upper stage. So that's also good. And this also has been taken from the authentic sources. Now, coming to the Bilaspur Smart City projects, let me give an overview of the Bilaspur Smart City project. The total city profile is like this. BMC area is, here it is shown 28.27 square kilometers. Because जब हमारा ये जो project start हुआ था
तो ये 28 square kilometers था, but now it has gone to around 120 square kilometers because बिलासपुर का BMC का एरिया अभी बढ़ा दिया गया, आप लोगों को पता होगा. So it has gone to 120 square kilometers and the total area based development area is just 4.21 kilometers. जैसे मैंने बोला था कि पूरा सिटी को नहीं ले जाता एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, ओनली वन पार्ट ऑफ द सिटी इज टेकन. अगर आप देखोगे इस मैप में, अगर आप देख रहे हो तो ये आपका जो रोड है ये व्यापार विहार रोड है एंड यहाँ से ये महाराणा प्रताप चौक, देन यू कम टू दिस नेहरू चौक एंड फ्रॉम द नेहरू चौक यू गो देयर and you go to the Gandhi Putla, and from the Gandhi Putla you come down to Tarbahar Chowk, and from the Tarbahar Chowk you get connected to the Vyapar Vihar Road and then to the Vyapar Vihar, then again to that place, Vyapar Vihar Road. So this is the area which is been earmarked for the area based development. In the sense, इसी एरिया में जो भी आपका रिट्रोफिटिंग होगा, जो भी आपका डेवलपमेंट होगा, जो भी स्मार्ट रोड्स बनेंगे, everything will be confined to this area only. And इसका जो एरिया है, it's around 4.21 square kilometers. The population is 3 lakhs. अभी ज़्यादा हो गया होगा because the area has been increased. And this was the population when we had taken this. And the density of population is 10,800 persons per square kilometer. Literacy rate is 77.8%, and the number of houses as per the census in 2011 is 69,000, which is now much more. Okay, so like I told you, Bilaspur दो projects होते हैं. Total value of the project of Bilaspur Smart City is 4,053 crores. Here is the thing. एंड इसमें से दो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला था, एक आपका एबीडी प्लान है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपके 60 प्रोजेक्ट्स हैं और इसका वैल्यू है 3,750 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. और दूसरा जो है पैन सिटी प्लान, पैन सिटी प्रोजेक्ट, जो मतलब पूरे सिटी में आप कर सकते हो. ये बेसिकली आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये 15 प्रोजेक्ट्स हैं और इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 303 करोड़. Okay, just broadly आप देख लीजिए, see what are the ABD projects. ABD projects है like strengthening the infrastructure, water projects where we can have the water meters, our 24/7 supply of water to all the households, housing for the poor, housing for the people who are below the poverty line. This is one project. हम इसको नाम दिए हैं बने घर, बने उत्थान. And then upliftment, then you have the projects on health, then you have the projects on greenery, like development of parks, development of ponds, all those things, and also the development of markets like the Brihaspati Bazaar, the Shanichari Bazaar, all this development of parks, markets, and improvement of the transport system, and Bane Bilaspur and Bane integration. So these are the projects which are coming under the ABD projects. It's broadly, and also the cost which has been allocated against each project is also given. Now coming to the PAN City projects, the biggest PAN City project is the Intelligent Traffic Management System. We also call it an ICCC, Integrated Command and Control Center, and IWMS is a part of it. So this is one of the biggest PAN City projects. And what is the position? I will just let you know as you go ahead. And Bilaspur City Operating System, this is also another project wherein a Bilaspur app has been developed, and the people of the city can also through that app give their grievances or put their points across to the concerned authorities. So this is broadly total project value is 4,000 crores. We have the ABD projects worth value of 3,750 crores, and also the PAN City projects which are worth 300 crores. Now, this is just an overview. The total project cost is given here. Smart City Fund is 861 crores. PPP fund is again public-private partnership projects are there, and which is 2,175 for the benefit of the students who are there. PPP is basically a project which is taken over by one company and one organization. They will develop the project, they will finance the project, and they will run the project and then hand over the project.
So everything is done by them. It's a revenue generating model. That means our government will not spend any money on these projects. The private parties will develop the project, finance the project, and also run the project. And after a few years, maybe 25, 30 years as per the agreement, they will hand it over back to the government. So government as such is not going to invest any money on these PPP funds projects. And there are the convergence friends. Now, to give a broad view of convergence, what is convergence is like smart city आने के पहले कुछ projects हमारे already चल रहे थे बिलासपुर में. For example, आपका प्लानिटोरियम जो अभी आपका तैयार होने वाला था, ये एक प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटी इंप्लीमेंट होने के पहले ही चालू हो गया था, अब उसके बाद भी चल रहा है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट और कन्वर्जेंट प्लान. सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट सिटी आने के पहले चालू हो गए थे, बट स्मार्ट सिटी आने के बाद उसके साथ मर्ज किया था, तो इसको हम कन्वर्जेंस फंड्स बोलते हैं. सो दिस आर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट्स. ओके, सो नो दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ एबीडी प्रोजेक्ट्स एंड द पैन सिटी प्रोजेक्ट्स. जैसे छोटा सा मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. जैसे बने सुदृढ़ इज reinforcement, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलिंग है, देन डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट है जो अभी हम करेंगे, डोर टू डोर कलेक्शन है. सो दीज आर सम ऑफ द making our sudrid means our infrastructure strong, backbone strong. Okay, now about the water projects, augmentation of existing water supply, 24/7 water supply and installation of SCADA and smart metering, and all these are the rainwater harvesting mandatory for all the government buildings. These are the projects which come under Bane Jal, and Bane Ghar is basically the affordable housing for all. Okay, and this is also one of the convergence projects. And then we have the Bane Uddhan, that is redevelopment of schools and colleges. And modular kiosks. अभी आप देखोगे तो modular kiosk का project अभी implement हो रहा है. कुछ जगह में आपको नए modular kiosks दिखेंगे, colorful. So yeah, this is a part of this Bane Uddhan. So this project is being implemented. Now others is like health projects, health ATMs, ATP kiosks with e-medicine, rent a cycle. This is I think is on the thing, happy streets, and these are few of the health projects. And Hariyar is basically greenery, alternate source of energy. So e-rickshaw, huge impetus is given to e-rickshaw, taking out the diesel rickshaws. So you can see that e-rickshaws have started flying, and now they're going to revamp it and increase it to a larger number of people, and slowly take out the diesel rickshaws because they are causing the pollution. And Jawali Nala place making and redevelopment, and park redevelopment of the few of these projects. And as far as markets are concerned, the redevelopment of Brihaspati Bazaar, the redevelopment of Sanishari Bazaar are the two biggest projects which are to be implemented, which are at an advanced stage of tendering. So these also will be implemented. And the Bane Parivahan is basically increasing the transport system. So you can see the amounts allocated to these projects. Each head is allocated some amount, and we have to spend this amount only under this. We cannot spend any amount from anywhere. So this is again the smart city project which has been earmarked by the center and the state. Now these are other things. I'm not going to go into the details of each of these. And coming to the ICCC project, I'll spend just few minutes on this project because this is a very important project and is basically the backbone of the IT infrastructure of Bilaspur. Now, once this project is implemented, you have the intelligent traffic management system wherein the challans जो अभी ट्रैफिक पुलिस आपको जंक्शन में रोक के आपका चालान काटता था, अब उनकी कोई जरूरत नहीं होगी. जैसे ही आपने कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ा, आपका नंबर प्लेट से आपका नंबर ट्रेस हो जाएगा और आपके घर पे आपको चालान आ जाएगा. So any rule breaking of the rules, there will not be a requirement of any traffic police anywhere. It will be centrally monitored, and all the challans, any traffic violations will be monitored. It will be recorded, and the challans will directly come to your house. So all the youngsters, be careful now. अभी आप लोग जो चलते हो ना, अभी लोग धड़ल्ले से एकदम ट्रैफिक काटते हैं, रॉन्ग साइड से आते हैं. All this will be stopped. Otherwise, you be ready to pay the challans.
सिटी सर्वेलेंस सिस्टम अगेन बेसिकली आप ऑलरेडी देखेंगे बहुत सारे जंक्शंस में सीसीटीवीज लगे हैं. Now all these CCTVs plus few more CCTVs will be implemented in all the junctions in all the places across the city, and these all will be centrally displayed at one place. That's called the integrated command and control system, and this is the nerve center of all the operations which are going to happen in the future. And I should tell you that ICCC project, the building building work order has been issued and the building work has started. And this is coming on the link road. Besides that, police thana which is there, once you come from the Tarbahar Chowk onto your left. And this building is going to come, and the IT part of it, the RFP is ready and tender is going to be floated. And once this building is going to be an iconic building for Bilaspur, like the Central Library, and this is going to be nerve center for all the IT operations. This is the nerve center, and this is going to come soon. So wait and watch for this. And once this comes, there will be a different level at which Bilaspur will be as far as the technology is concerned. All the latest technology is going to come into this. So this is about the PAN. This is again a PAN City project, ICCC project. Okay, now let me come to the topic of the day, that is the integrated waste management system. I'm going to discuss on this. This is my topic, but then I have taken some time giving you the brief about the background. Okay, so the scope of this IWMS project is to design, build, finance, operate, and transfer a composite consolidated municipal solid waste management project at Bilaspur, right? So अभी जो करंट सिनेरियो इस तरह से है, जो सोर्सेस ऑफ गार्बेज जो है, ये है सॉलिड वेस्ट आपके घर से, हाउस होल्ड से आते हैं, और शॉप्स एंड कमर्शियल प्लेसेस से भी यू हैव द वेस्ट. यू हैव द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम रोड क्लीनिंग एंड ड्रेन्स. आप देखते होंगे कि ड्रेनेज से जो भी कचरा मलबा निकलता है उसको रोड में लगाते हैं, ये एक वेस्ट है. एंड आपके रिवर्स एंड पॉन्ड से, वहां वाटर बॉडी से, वहां से भी वेस्ट निकलते हैं, सेप्टिक टैंक से वेस्ट निकलते हैं, एंड जो डिब्री निकलता बिल्डिंग से, कंक्रीट का जो डिब्री निकलता वो भी एक वेस्ट है, जो बिल्डिंग्स आपको डिमोलिश करते हैं तो उसके बाद. सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वेस्ट व्हिच आर जनरेटेड इन अ सिटी एंड आल्सो इन बिलासपुर. नाउ इफ यू सी, अभी जो वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा था, एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं था कि सॉलिड वेस्ट को यूज करे, डिस्पोज ऑफ करे as per the guidelines which are given by the government. And इसको हम MSW rules बोलते हैं, but there was no provision for government, for the municipal authority to dispose it as per the MSW rules. तो वो क्या करते थे कि कोई भी एक जमीन देते थे, open space लेते थे, and they used to dump the whole thing there, which was actually creating chaos. It was polluting the atmosphere. It was not giving that value to the Bilaspur city, because naturally the dump which is being collected is so huge that you keep piling up in open spaces, so it is going to be huge. So to overcome this, this is the current waste management proposal which was there before the implementation. And now जो अभी जो current process है, जो कुछ सालों से चल रहा है, ये पूरे प्रोसेस को आउटसोर्स किया गया है टू दिल्ली MSW Solution Limited, DMSW Limited. अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह में आपको गाड़ियां आती है कचरा उठाने के लिए, कुछ लोग आते हैं, गाड़ियां आती है, कचरा उठाती हैं, वो उस गाड़ियों में डाल के चले जाते हैं. तो ये जो है ये आउटसोर्स किया हुआ है दिल्ली MSW को. और ये लोग कैसे काम करते हैं कि इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर डोर टू डोर जाके वेस्ट को कलेक्ट करे. पूरे जो 70 वार्ड्स है बिलासपुर में, अक्रॉस में देयर आर 70 वार्ड्स, हर घर में जाके डोर टू डोर कलेक्ट करें. और ऑल्सो इन्होंने करीब 63-65 व्हीकल्स को एम्प्लॉय किया है. कॉम्पैक्टर व्हीकल्स है, 8 कॉम्पैक्टर व्हीकल्स है. कॉम्पैक्टर बड़े से व्हीकल्स आप देखोगे जो रोड्स में दिखते हैं, जो कचरा उठा के जाते हैं, वो 8 हैं इसमें. और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे 550-600 बिन्स इन्होंने अलग अलग टाइप के पूरे सिटी में डाले हैं, अलग अलग जगह पे. एंड ये जो ऑटो ट्रक है जो घर से आपका कचरा उठाता है, वो इस तरह से काम करता है.
चूंकि आप बिलासपुर से बहुत लोग हैं तो आपको भी जानना जरूरी है, एंड यू आर द सिटीजन्स ऑफ बिलासपुर एंड यू हैव ऑल द राइट टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ दिस वर्क्स, एंड होपफुली आप जानते भी होंगे, बट देन या सिंस आई एम देयर हियर सो आई जस्ट टेल यू, जो घर से आपका जो कचरा उठाता है वो जाता है कॉम्पैक्टर, कोई एक कम्युनिटी बिन में जाएगा, या फिर जब भर जाता है तो कम्युनिटी बिन में जाएगा या कंपैक्टर में जाएगा, या इनके ट्रांसफर पॉइंट्स हैं वहां पे जाके वो उसको डिस्पोज ऑफ करता है, उसके बाद फिर वो सेकेंड राउंड के लिए जाता है। इट्स नॉट दैट कि आपके पास जो गाड़ी आता है वो एक ही राउंड करता नहीं, वो 2 या 3 राउंड करता है दिन में। तो जैसे ही उसका भर जाता है वो या तो बिन्स में जाके डालेगा, बड़े बिन्स में डालेगा, या एक कंपैक्टर व्हीकल में डालेगा जो बड़ा सा है, या फिर उनके ट्रांसफर पॉइंट से वहां पे जाके डालेगा। एक बार वो डालने के बाद ये जो कचरा है सेकेंडरी कलेक्शन एरिया या ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स में जाते हैं, वहां से उस जगह से, और उसके बाद वहां से कंपैक्टर्स जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो उसको लिफ्ट करते हैं, और ना केवल वहां से कंपैक्टर्स जो है स्ट्रीट्स, कमर्शियल एरियाज, मार्केट प्लेसेस के जो जहां पे कचरा क्वांटिटी बहुत जाता है वहां पे भी जाते हैं, वो लिफ्ट करते हैं। और इसके बाद ये पूरा जो वेस्ट है जो पूरा बिलासपुर का पर डे जो कलेक्ट हुआ है ये जाता है कचार। सिंदरी में एक इनका कचार प्लांट है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ये वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस which takes place on a day-to-day basis। हर दिन ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है और ये वहां पे कचार में जाके डिपॉजिट होता है। ओके, तो अभी के सिस्टम में अब ये जो है दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज डन बाय दिल्ली MSW जो मैनुअली कर रहा है। तो अभी जो चैलेंजेस है, अभी क्या हो रहा है कि जो मिक्स्ड जनरेशन जो होता है, जो घरों में आपका होता है मिक्स्ड वेस्ट होता है, इन द सेंस वेट भी होता है और ड्राई भी होता है। लॉजिकली क्या है कि आपको हर घर में आपको वेट और ड्राई को सेपरेट करना चाहिए। उसी कारण आपको देखोगे आपके यहाँ पे 2 बिन्स दिए हुए, एक ग्रीन और एक ब्लू, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि घर वाले हम उन दोनों को अलग से सेपरेट नहीं करते, हम एक ही में डालते हैं। तो फ्रॉम द सोर्स आपको एक मिक्स्ड वेस्ट मिल रहा है, राइट? उसमें आपको कचरा ड्राई भी मिलता है और वेट भी मिल रहा है। अब ये जो मिक्स्ड वेस्ट है ये आपको आगे चलता है, तो सेपरेशन ऑफ ड्राई एंड द वेट इज नॉट टेकिंग प्लेस एट द सोर्स। नाउ सेकेंड वाला जो है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। ये जो वेस्ट हम करते हैं डिस्पोजल इन द सेंस जब हम कचार में जाते हैं उससे पहले हमको उसमें जो भी रिसोर्सेस है उसको एक्चुअली रिकवर करना चाहिए। अब मैनुअली करो, मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेटिकली करना चाहिए, बट समहाउ हमारे पास ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं जहां से हम रिसोर्सेस को उसको वहां से वेस्ट में से रिसोर्सेस को निकाल पाए। सो क्या होता है कि पूरा वेस्ट हम जो कलेक्ट करते हैं वो जाके हम वहां पे डंप कर देते हैं। ओके, नाउ डिस्पोजल शुड बी इन अ साइंटिफिक वे, साइंटिफिक वे से डिस्पोजल होना चाहिए, बट जो यहाँ पे नहीं हो रहा है बिकॉज ये खाली जाके ओपन लैंड में डाल दिया जाता है। Okay, so these are the gaps which are there in the current system. अब ये challenges फेस हुए हैं जब हमने देखा कि कैसे करना चाहिए है। तो जैसे सबसे पहला चैलेंज है कि कोई भी मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है गार्बेज कलेक्शन, कितना गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस घर से नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर नहीं हो पा रहा था। और जो लैक ऑफ ट्रैकिंग मिस्ड कलेक्शन पॉइंट, कोई भी कलेक्शन पॉइंट है जहां पे कलेक्ट नहीं हुआ, सपोज बृहस्पति बाजार है और बुधवारी बाजार है, तो वहां से कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ उसका ट्रैक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सेंट्रली हमारे पास कोई लोकेशन नहीं था जहां पे ट्रैक कर पाए हैं। ट्रांसफर स्टेशन पे जैसे मैंने बोला डंप यार्ड्स पे कितना वेस्ट एक्चुअली डंप हुआ वो भी नहीं पता लग रहा है एज ऑफ टुडे। एंड बहुत सारी जगह मैनुअल प्रोसेसेस हैं डाटा कलेक्शन में, जैसे डाटा ट्रांसफर है वो मैनुअल है, देयर इज नो ऑटोमेटिक सिस्टम। एंड जब गाड़ियां पूरा कलेक्ट करके कचार में जाती है तो वहां पे एक वेट ब्रिज है जहां पे वेट करता है कि आपकी कितना गार्बेज आया है वहां पे उस दिन में उस ट्रक में, बट इसका भी कोई ऑटोमेटिक हमारे पास कंट्रोल नहीं है कि पता लगे कि क्या। जैसे अब मैं बिलासपुर नगर निगम के अगर हम देखें तो बिलासपुर नगर निगम के जो MD हैं, जो कमिश्नर है, इफ यू वांट्स टू नो कि आज के डेट में मेरे पास कितनी गाड़ियां कलेक्ट की है, कौन कौन सी जगह से कलेक्ट की है और आज कितना कचरा हमारे कचार में गया, तो एज ऑफ टुडे ही डजंट हैव एनी इंफॉर्मेशन।
right? So this was a big gap because he was not able to understand कि कितना गाड़ियां कहाँ जा रही है. Complaints तो बहुत आते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि पता लगाए कि कहाँ से उठा है कचरा, कहाँ से नहीं उठा है, क्या वो जो कंप्लेंट आया है वो सही है या नहीं है. There was absolutely no visibility on a real time basis. किसी भी वक्त अगर कमिश्नर को या डिप्टी कमिश्नर को या किसी भी नगर निगम के ऑफिशियल को जानना चाहे कि कहाँ पे कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ियां फील्ड में है, तो ये इंफॉर्मेशन आज इनके पास नहीं है. और कोई भी प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं था, प्लस अटेंडेंस मॉनिटरिंग नहीं था, मतलब कितने लोग आए हैं आज, कितने एब्सेंट हैं, किसने कितने बजे उन्होंने अपना वर्क ज्वाइन किया. ये सब चैलेंजेस थे जो अभी हम फेस कर रहे थे. इसको लेकर हमने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने के प्लान किया. हम मतलब बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने, जहां पे जिसका ऑब्जेक्टिव है कि एक डैशबोर्ड पे सब कुछ दिखना चाहिए कि गार्बेज कलेक्शन स्टेटस क्या है पूरा सिटी का आज के डेट में. डोर टू डोर से कहाँ पे गार्बेज ओपन हो रहा है, कहाँ से पिकअप हुआ है नहीं हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए. रियल टाइम अलर्ट्स आना चाहिए कि हाँ यहाँ से अगर गार्बेज नहीं उठा है तो रियल टाइम अलर्ट आना चाहिए. और विजुअली आपको मॉनिटर कर पाए कि कहाँ पे गार्बेज उठा है, कौन सी गाड़ी कहाँ पे है, कहाँ जा रही है, ऑन अ रियल टाइम बेसिस. दिस शुड बी देयर. दिस इज वन ऑब्जेक्टिव. द अदर ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड होना चाहिए, बिकॉज आगे चलकर जैसे मैंने बोला था कि वी हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग. आगे चलकर डाटा एनालिटिक्स, artificial intelligence, these are going to be the major topics. Now if we maintain a record, now the data, the software will start analyzing this particular data and also giving a analytical report future में कैसे होगा, क्या होगा. So based on that artificial intelligence we can actually tweak our programs, tweak our schedule and everything. So data analytics is a very very important aspect जो अब आएगा. Estimation comparison between the estimated actual garbage and the collection. जैसे मैंने बोला कि हमें आज के डेट में ये पता नहीं लगता कि एक्चुअल गार्बेज कितना है, लेकिन जब ये आ जाएगा तो कितना एस्टिमेटेड है, हमारा कितना कलेक्ट हुआ है, ये हमें पता लगेगा. एंड biometric will be accurate because everybody will be putting their attendance using the biometric and real time weighbridge. This is another objective. And the third very important thing which is going to come up with this is that smartphone पे application होगा. Citizens can directly raise a complaint, put their grievances, and system generated reports will be there, and manual practices कुछ भी नहीं होंगे, सब everything will be automated. And increased transparency, everything will be transparent because everything is automated, there is no manual intervention, so everything will be transparent. So these are the objectives, main objectives of the smart city IWMS project. Now इसमें major components क्या है मैं आपको बता दूं. The major components are like the intelligent waste management application. The base, the foundation of the whole project is the IWMS application, which is a very very complicated application which will have vehicle tracking system जिसमें आपको vehicles कहाँ पे है वो पता लगेगा, and fleet status monitoring. फ्लीट का स्टेटस क्या है, अगर आपके पास 100 गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां फील्ड में हैं, कितनी गाड़ियां आपके गैराज में हैं, कितनी गाड़ियां अनसर्विसेबल हैं, कितनी गाड़ियां अनसर्विसेबल होके कब वापस अपने जॉब्स में आएंगी, ये सब फ्लीट मैनेजमेंट स्टेटस से आपको पता लगेगा. एंड ऑल्सो द इंटीग्रेशन ऑफ वे ब्रिज एप्लीकेशन. तो कचार में जो वे ब्रिज लगा है वहां से आपका इस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन होगा ताकि आपको पता लगे कि पर डे कितना वेट आप कचरा बिलासपुर से गया है और उसके बाद जब वहां से मैन्योर बन के जाएगा तो कितना मैन्योर गया है, कितना कचरा मैन्योर में कन्वर्ट हुआ. सो दीज आर द 3 मेजर एप्लीकेशंस. एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, दिस whole application, the intelligent waste management application, will be over the GIS map of Bilaspur. Now GIS map of Bilaspur will actually give the exact location of all the property, every property of Bilaspur. And when this application will be on that GIS map, you will get a real time location of all the
vehicles and also the manpower. You can actually see the manpower moving through this particular application. Now, there is another application of part of it is the grievance redressal system, where any citizen through the app can also put his grievances or the complaints. There will be a mobile biometric attendance system. अब ऐसा नहीं होगा कि आपको एक लोकेशन में जाके आपको बायोमेट्रिक थंब देना पड़ेगा. Through the mobile also you can give your attendance system, and once your attendance system is given, your attendance is logged, you will be tracked throughout the day, right? And the third one is the IP surveillance cameras for monitoring and surveillance of waste messed up and identified. So we have 10 different locations across the city where the CCTV cameras are there to give a real-time thing as to how much is the these are basically at the public places. So these particular CCTVs will give as to whether the dump kitna dump wahan pe hai, kitna utha hai, nahi utha hai, last kab utha hai. Every information will be there and which can be viewed centrally in the integrated command and control center. And this is an end-to-end integrated solution proposed and with an integrated approach. So these are the major components of the application. Now coming to the implementation operations, these operations, this particular project should be scalable in the sense because the population is increasing. As the population is increasing, the components, the kachra will also increase. So this whole system, architecture of this system should be built in such a way that it should be able to scale in future. And the major technological components जो scale होने वाले हैं वो है bandwidth, network का bandwidth, computing performance, because जैसे कचरा increase होगा that data बढ़ेगा तो IT infrastructure जो computing performance है that should also be scalable, and software and application performance should also be scalable in parallel in line with the components and the other things. So scalability is a major factor which should be incorporated in this particular thing. And the next one is the availability. The whole IT infrastructure should be available 24/7. There should be complete redundancy to ensure that there is no single point of failures at any point in time. This is so very important. So all the project components should be planned in such a way that it has a redundancy at every stage, right from the server to the components which are there in the field. Coming to the manageability, end-to-end configuration, online health monitoring, and failure detection are the vital goals of scalability, availability, and security. And this application should have all of these incorporated into it. Now, interoperability is the system should be designed to take input from other third-party system as per the situation requirement. For example, I'll tell you, like presently, हमारे पास vehicles हैं जिसमें GPS already installed हैं. Now, इस GPS का जो output है, this has to go to the application. Now, this GPS is already running on some platform with some system. Now, the new system which is coming should be able to talk to this particular system and take the data from that GPS system and put it into its application. So that is called the interoperability. The existing system and the third party system, and this system should always be interoperable and should be able to ready to take any of the system from any other thing. Okay, and security is of course very important because data is involved and each data is so very important. The architecture should be totally secure and end-to-end secure. Now, coming to the project objectives. The objectives of the project is a single dashboard to showcase the garbage collection status. Like I told you, कि एक dashboard होना चाहिए जहाँ पे पूरा garbage collection status हमारे authorities को पता, be it the collector, be it the commissioner, be it the deputy commissioner. Anybody should be able to see on their mobile on the dashboard part of it. I will show you the screenshot of the dashboard also, and they show real-time alerts on the missed garbage collection. The alerts should be real-time. Suppose आपके घर से कचरा नहीं उठा है, तो
जैसे ही कचरा नहीं उठेगा तो आपका रियल टाइम अलर्ट जाएगा कि आपके यहाँ से फलाना जगह से वो गार्बेज नहीं उठा है, एट to a central location which will be monitored 24/7 by the help desk people. So they will have a display in front of them and they will see the vehicle that this vehicle has skipped this particular house and has gone forward. So real time alerts will be there, should be there, and detection and monitoring of door-to-door garbage collection points, waste collection point, community bins. मतलब घर से जो कचरा उठा रहा है, कम्युनिटी बिन से जहां से कचरा उठा रहा है, और वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स में जहां पे डंप किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रीमलाइन द अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम. जो अटेंडेंस है, जो लोग सुबह ड्यूटी के लिए आते हैं, कोई 8 बजे ड्यूटी के लिए आता है, कोई 9 बजे ड्यूटी के लिए आता है, सो द नंबर ऑफ आवर्स ही शुड फुलफिल. सो द मोमेंट ही कम्स, उसका अटेंडेंस मार्क किया जाएगा, एंड वंस हिज अटेंडेंस इज मार्क्ड ऑन द मोबाइल, हिज मूवमेंट्स विल बी ट्रैक्ड in the sense in which ward he is, from where he has gone to which ward, at what place, to which market he has gone. Everything will be tracked and all the records will be maintained. Well, and of course, the final one, which is the objective, is to have a mobile app for citizens to raise grievances and share our feedback. So any citizen through this app can actually give a feedback and also can raise his complaints as grievances. So this is the objective with which this project, IWMS project, has been done. And the solution proposed by the, and as I told you, this particular project is being implemented by Madras Security Printers, which is a Madras-based 40 years old company. So the solution which is proposed by them is a web-based application software integrated with GPS, RFID devices, weighbridge, biometric staff attendance management for planning and scheduling, waste management, fleet management, and business interface dashboard. Okay. Now, RFID based door-to-door collection monitoring system, RFID based community bin waste collection system, and citizen mobile app for grievance management. आगे चलकर I'll just tell you briefly as to how does this RFID work. Radio frequency identification. RFID stand for radio frequency identification. How this works, we will see in a pictorial way so that it becomes clear to everybody. And now this is the SWM application. This is the IWM application, and you have at the core the Trinity is basically the company which is providing this platform, and we have at the core the Trinity application which is in the cloud, and you have this SWM operation center where everything will be monitored. You have the citizen app and the workforce app. This citizen app, the citizens can use. This workforce app, the supervisors and the drivers can use. You have the staff attendance system at the bottom. And then you have this weighbridge integration where the compactors are going into the kachar. Their weight is being monitored here. And this is again coming back to the application. And you have these small जो vehicles आपके यहाँ पे कचरा उठाने के लिए आते हैं वो हैं, उन पे RFID रीडर्स लगे हुए हैं और RFID टैग्स जो है बिन्स पे लगे हुए हैं. तो ये RFID रीडर, ये बिन्स जो RFID व्हीकल्स में जो रीडर्स लगे हैं, जैसे ही व्हीकल आपके घर के सामने से जाएगा तो आपके जो बिन्स में, अगर आप देखोगे तो आपके बिन्स में एक व्हाइट वाला एक पट्टी लगा हुआ है. सो दैट इज द RFID टैग. जैसे ही वो गाड़ी आपके घर के पास से जाएगा या फिर आपका बिन उस गाड़ी के पास जाएगा तो ये रीडर उसको रीड करेगा, एंड उसके बाद उस व्हीकल में जो जीपीएस डिवाइस लगा हुआ है, उस जीपीएस डिवाइस के थ्रू इट विल गो टू द एप्लीकेशन. दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. सो here is an IoT internet. I believe कि आप लोग सबको IoT पता, students especially, you must be knowing what is IoT. This whole project is an IoT based device, Internet of Things. Everything is intelligent, everything is sensory. So he is using the sensors to use this particular application. So IoT based and artificial intelligence platform based on application aligning SWM activities such as scheduling, planning, fleet management, workforce management, citizen grievance, everything.
It also this application will also standardize the response protocol for SWM operations, enhance the collaboration across departmental. Yes, I think it will be too high. So sufficient to understand how this particular application will work. Now, ये थोड़ा सा समझ लो कि how the door-to-door collection, because this is very important that you also understand how this works. But until you understand, you will not be able to appreciate when this particular vehicle comes. I'm sure कि अगर आज ये presentation आपने ध्यान से सुना, तो कल जब आपके पास गाड़ी आएगी, then you'll try to understand कि क्या हो रहा है, कैसे हमारा जो whole process काम करता है. Okay, so suppose ये वाला एक गाड़ी है, आपके घर में आया सुबह में कचरा उठाने के लिए, और ये आपका बिन है, और आपके बिन में आपने देखा होगा तो एक व्हाइट सारा पट्टी लगा हुआ है, दैट इज द RFID रीडर, RFID टैग. इस टैग में कैंटीना है. तो जैसे ही ये गाड़ी आपके पास में घर के पास से आता है, या फिर आपका बिन गाड़ी के पास जाता है, तो ये जो रीडर है ये इसको रीड करेगा. The moment it starts reading, this reader is integrated with the GPS unit which is there in the vehicle, which is already there. तो इस रीडर को हम इस GPS के साथ कनेक्ट करेंगे, और इस GPS के थ्रू it will go to the SWM solid waste management cloud application में जाएगा. And once it goes to that application in the servers, it will be relayed back to the help desk. There are two monitors which are there, which are ultimately going to be there in the ICCC thing. So this will be displayed there. So this is how the RFID thing works. RFID based door-to-door collection. You have the bins, you have the RFID tags there. जैसे tag reader के पास जाएगा या vehicle के पास जाएगा, reader will read it. Reader is in turn connected through the GPS equipment to the application, and through this GPS it will go to the cloud. And here there are two things happening. One, through the GPS equipment, the vehicle का जो location है, coordinates है, वो भी जाएगा. Also ये रीडर के हाँ इस घर से, बिकॉज हर रीडर में उसका लैटलॉन्ग दिया गया है, तो ये रीडर से बोलेगा कि हाँ इस लैटलॉन्ग में ये वाला घर है, इस वाले वार्ड में, इस वाले स्ट्रीट में है, तो ये रीडर के थ्रू इट विल गो टू द क्लाउड. ओके, एंड देन इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द मेन थिंग. सो दिस इज हाउ this particular RFID door-to-door collection works. Now this is the detail. I have already explained it to you. And coming to the RFID based community bin collection. Community bin मतलब जहाँ पे जो मार्केट प्लेसेस है, जहाँ आप ले लो शनिचरी बाजार, आप ले लो सिम्स हॉस्पिटल, आप देख सकते हो जी हमारा जो बृहस्पति बाजार, यहाँ पे आप देखोगे कि बड़े बड़े बिन्स लगे हुए हैं. नाउ ये कम्युनिटी बिन्स है, तो यहाँ पे भी, इस पे भी टैक्स लगे हैं, स्पेशल टैक्स लगे हैं. जैसे ही आपकी गाड़ी वहां पे पिकअप करने जाएगा, उस गाड़ी में जो रीडर लगा है, उस गाड़ी के रीडर उसके GPS के थ्रू इट विल गो. So there are two places. One is door-to-door collection. The second one is the community bins. The process of working is the same. And here also the process is same. Okay. And now biometric based. So ये तो collection, door-to-door collection होगा, community bin collections हो गए. Now the third part is the biometric based attendance system. Now mobile में एक ऐप आएगा जिसमें कोई भी वर्कर जो आता है, जो भी एम्प्लॉय आता है, he will come and put his attendance. The moment he puts his attendance, it go to the platform, and from the platform it will go to the SWM operation center. This is the nodal center from where it will be displayed. Okay. So everybody's attendance, everybody's movement, login time, check-in time and check-out time will be monitored from minute to minute, and the whole data will be saved for future analytics, data analytics. And now coming to the major components which are included in the IWMS project. These projects, if you see, this is the central location where you have the servers. There are different servers. मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा. This is called the IWMS control center, or the server room, or the data center, whatever you call it. We have a big display where everything will be displayed, and through this is connected to the RFID tags of the vehicles. This is connected to the field staff through their mobiles. This is again connected to the mobile app for the citizens. And also this is connected to the community bins.
And also this is again connected to the way bridge at the Kachar. So everything connected, all the information, all the data is now there. CCTVs also. This community bins are through CCTVs. Okay, you can see the CCTV here. तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है पूरे दिन का, जितनी भी गाड़ियों का, हर घर का, हर मार्केट का, every information is now being collected centrally at the server room and it's being displayed on a real-time basis. And since it is on a GIS map, which is accurate to less than a meter, so you can see the position of the vehicles, the position of the personnel on a real-time basis in front of you. And all the data is being recorded. So this is how the major thing works. I'm sure कि आप लोगों को थोड़ा सा तो fundamentals clear हुआ है broadly as to how the integrated waste management system is going to work. I try to explain it in a very simple manner. अब थोड़ा सा IT वालों के लिए जो मैं ये सर्वर रूम की बात कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा जाते हैं क्या सर्वर्स है. सर्वर रूम तो मैंने बता दिया, बट इसमें क्या क्या सर्वर्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रॉडली बताऊंगा. एंड यू आर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आई सपोज मोस्ट ऑफ यू, so you should know as to how this works. This is the proposed data center architecture and ये आपका internet cloud है, right? From the MPLS router, this internet will come, it will go through a firewall. And firewall में हमने restrictions लगाए हैं, हमने rules लगाए हैं. So only the desired data which is coming from different sensors will come through the firewall. Otherwise, firewall will just reject them. It will come through an L3 switch, and from the L3 switch, it will go to the servers. You have 2 application servers and 2 database servers. There are total 5 servers actually, and these 2 application servers are connected back to back. So failover redundancy जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे redundancy दिया गया है. अगर एक सर्वर फेल होता है तो the second server will seamlessly take over. The database servers also, there are 2 database servers. If one database server fails, the other database server will take over. And this data of these application server and the database server through a switch is now connected to a SAN storage. There is a huge storage area network because all the data from the sensors are going to come in the form of images mostly. So when these images come, it requires a huge storage. So this data from the application and the database servers are going to be stored in the SAN storage. And we have a web server wherein the web application will be running. And this will not have much of the data because data is all stored in the database server. So this is how the architecture is going to take place. Now, as of now, just for everybody's interest, as of now, we have established this server room or a data center room in the Nagar Nigam building, the Bilaspur Smart City building on the 2nd floor as an interim measure because the ICCC project, which I was talking about, integrated command and control system, the project is yet to come and it will take some time. So in the interim, this has been developed. This has been this has almost reached 80% of the completion. And once that ICCC project comes, all these servers will be shifted there. And in the ICCC project, in the ICCC command and control center, there will be a huge display of TVs and all the data, not only from here, also from the ITMS, also from the surveillance system of the city will be displayed centrally. The huge display screen will be there. So for the interim, we have this in the Nagar Nigam building, just opposite to the Nehru Chowk. So this is how the database structure is going to work, architecture. And also for more interest of those people who know more about this, each server के अंदर में हमारे पास virtualization हुआ है, virtual machines हमने create किए हैं. हर एक server में there are 4 servers, there are 2 Windows servers, 2 Ubuntu servers, and in each of these servers we have virtual machines which have been configured and downloaded because physically we have only 4 servers, but virtually I think we have around 11 to 12 virtual machines which are there, which are going to run different applications on these virtual machines. Right, so I'm not going to go into the details, and this is how the whole of the virtualization architecture is. So coming to the grievance redressal system of
an citizen. कोई भी citizen अपना ऐप के थ्रू कोई भी grievance डाल सकता है. This will go and the action will be taken. Once the action is taken, it will go as a notification to the person who has put this grievance. अगर कोई action नहीं लेते हैं, so delay होता है action लेने में, तो it will be escalated to the seniors. And once this is then, this will be verified. The action taken will be verified by the reporter, and then it will go back to the person who has been taken the action. And also, this data is going to be recorded for future use, right? For the artificial intelligence, for the data analytics, this particular thing will be used. Now coming to the project plan, this project started, implementation of this project started in December 2020, and the time period was 7 months. But due to the corona, almost 1.5 to 2 months were lost, but we were on track, and this project is completed almost 70 to 80, 75% of it. So in the next few weeks, you will see this particular project being launched and getting online. So as per this, it should have been July, but because of this corona, because of the lockdowns and all those things, this is slightly delayed by almost 2 months or so. So we are on the work, and the work is in full pace now. Everything is in place, just the configuration of the software, the configuration of the all the other sensors is being taking place. So this will, the customization will take place, and very soon you will be seeing this app on your mobiles, and the whole project is going to be operational. And once again, I'll tell you, this is one of the major projects of Bilaspur, like the ICCC project, which is going to change the whole outlook of Bilaspur. Integrated waste management system, when it will be no manual processing involved, it's a real-time checking. This will also change the face of the Bilaspur city. It will go to a different level. Now there are a few value propositions which are given by the value additions. You can say this is the planning and scheduling, means each यहाँ पे क्या होगा कि हर एक vehicle का planning, route planning, किस रूट से जाएगा, किस वार्ड में जाएगा, किस स्ट्रीट में जाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक है. Every planning can be done here. That's why it's called planning and scheduling. Not only vehicles, you can see the vehicles कहाँ से गए, क्या है, पूरा details dashboard में रहेगा. Not only vehicles, even the manpower planning can also be done here. Which manpower is to be deployed where, in which ward, which street. To that extent, every planning can be done. This is called planning and scheduling. This is the fleet management. You can see the fleets on a real-time basis on the map, where they are moving. आप लोगों ने देखा होगा ओला जो मूव करता है ना, ओला में आप देखोगे तो जब आप बुक करते हो तो ओला की गाड़ी कहाँ पे है, आपके घर से कितने दूर आपको दिखता है. But that is not an accurate map. This map, GIS map, when it will be superimposed on the GIS map, it will be much more accurate as far as the displacement in the time is concerned. So this is how the fleet management will be done. And fleet management में ना केवल आपको real time tracking दिखेगा, आपको ये भी दिखेगा कि कितनी गाड़ियां ऑफ रोड हैं, कितनी गाड़ियां मेंटेनेंस में हैं, कौन सी गाड़ी कब मेंटेनेंस से बाहर निकल के ऑन रोड आने वाली है. All the information will be available in this fleet management system. This is again bin location and route creation. Suppose एक particular गाड़ी है, उसका बिन लोकेशंस कहाँ पे है, वो डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, बिकॉज हमने RFID टैग लगाए हैं, तो हमको लैटलॉग मिल चुका है. तो बिन कहाँ पे है, बिन्स हैं, और कौन सी गाड़ी का रूट क्या होना चाहिए, ये भी हम शेड्यूल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू. दिस इज अगेन द रूट. एक बार आपने रूट क्रिएट कर दिया तो ये आपको रूट दिखेगा. इनफैक्ट दिस रूट विल बी विजिबल टू द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, because everybody is tracked. So this route, he will know कि कहाँ से मुझे कहाँ जाना है. So the track will be there, and this will be seen real time at the central location. So this is the dashboard which will be available to the authorities, be the commissioner of Nagar Nigam, or the MD of BSCL, or the collector, anybody. So he will see कि how many total vehicles are there, कितना distance उसने travel किया, कितना garbage weight उठा अभी तक, कितने bins
उसने कवर किया टोटल बिन्स कितने हैं, बिन प्रेडिक्शंस कि बिन कहीं अनसर्विसेबल है तो वो भी बताएगा वो, एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी अवेलेबल। बिन स्टेटस कितने बिन्स खराब है वो भी दिखाएगा आपको, स्टाफ अटेंडेंस को दिखाएगा एंड व्हीकल ट्रिप अवेलेबल, कितने कौन सी गाड़ी कितने ट्रिप्स किए हैं, दैट आल्सो विल बी अवेलेबल. So this is a comprehensive dashboard which will be available to the authorities to understand on a real-time basis. कौन सा position क्या है, what is the actual garbage which is being lifted, कौन सी जगह से garbage lift नहीं हुआ है, etc. etc. So this is the dashboard which will be available. And this, by the way, this particular software has been developed by Trinity, and Trinity has already implemented this in 3 or 4 of other smart city projects. So it's a proven software application. Now this is the driver app and the supervisor app. So driver will be able to see these things, कितने ट्रिप्स उसने किए हैं, कितने पेंडिंग है, कितने चल रहे हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं, कितना बिन्स उसने उठाया है, कितना कलेक्ट किया है, कितना पेंडिंग है. सो ऑल डाटा विल बी अवेलेबल टू द ड्राइवर. ड्राइवर भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते कि मैंने इतना किया इतना ही, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड ही कैन आल्सो सी दिस. एंड staff attendance will be seen like this, कितने staff आए हैं, कितना ये हुए हैं, कितना, and every staff can also be tracked. Okay, biometric integrated staff attendance and real-time monitoring. Now the core team for the Bilaspur SWM project is like this. It's a project manager, manpower during the implementation stage. I'm the project manager. I have a solution architect. I have a network and infrastructure expert who is positioned here, and we have the help desk executives. Those 2 help desk executives are required. So this will be required once the project goes on live. But we have already employed them, and they have been working and helping us tremendously in the implementation of this RFID tags, because RFID tags, putting the tags on each of the location and maintaining an Excel sheet, soft copy of this is a huge tag, because we have total 50,000 tags. And for each tag, we need to have RFID tag ID. We need to have the latitude, we have to need the longitude, we need to know at which location, which ward, which gully it has been implemented. So all this data for 50,000 tags is being monitored and populated by the help desk, future help desk, 2 interns who are working with us. So this is the core team of Bilaspur SWM. I think I have done with it. Now the proposed integrations, just to give for the experts who are there, SWM IoT platform infrastructure, because this is all about IoT, Internet of Things, and we are using the sensors all over. And if you see in the first stage 1, it is sensor and application ecosystem, जहाँ पे आप देखोगे कि पहले में you have an external application data. Now this is, like I told you, the GPS data from other application. This is one input. The other input is from the IoT devices, the smart sensors like the GPS, the RFID readers, the vehicle readers, etc., the CCTVs. So this is other. So these will come, and this is the stage 2. This will normalize. These readers will come to the backbone messaging servers, to our IoT backbone messaging servers. And from there, it will go to the data analytics engine, where the data will be stored and data will be analyzed. And this is a very complex processing engine which will be there, will take place at the backend. And from there, it will go to the database servers. And in the case of the external application, there will be an API gateway. Through the API gateway, it will be coming to BPM, business process management, or the GIS, the map, the MEP, or the media store, whatever is any of these. And from there, it will go to the solid waste management application, input to the management application. You will have automatic vehicle tracking. You have the citizen mobile app. You have the field staff attendance and the dashboard. So this is how stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, the whole application is going to. This is the application architecture broadly. And the Weybridge integration is going to take place like this. You have a camera there. You have the GPS RFID tag, which is there in the vehicle, which is going, which is having a GPS device.
and you have the weighbridge gateway. So the moment the vehicle goes there on the weighbridge, the CCTV will read it. The GPS device will send the information. The weighbridge device, through this weighbridge device gateway, the information will go to the application platform, which in turn will go to the nodal agency, that is the help desk. So this is how the weighbridge integration will work. Another major important part of weighbridge is that all the kachra which is being lifted throughout the city is going to the weighbridge to the kachar, and kachar में ये जो कचरा को हो इसको convert करते हैं manure में, and which the manure can be actually sold. तो एज ऑफ नो हमें ये पता एग्जैक्टली नहीं पता लग पा रहा कि हमारे बिलासपुर से पर डे कितना कचरा उठ रहा है और कितना मैन्योर बन रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स फॉर बिलासपुर, फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो इसके आने से क्या होगा कि हमें पता लगेगा कितना कचरा आ रहा है और कितना मैन्योर बन के जा रहा है. एक तो हमें पता लगेगा कि बिलासपुर में कितना कचरा पर डे इकट्ठा हो रहा है और उसके इसमें से कितना हमारा कचरा बन रहा है. तो बाकी जो माइनस रहेगा दैट इज द थिंग व्हिच इज नॉट being used or which can be which is a recyclable resources. So this is again a very important application package, one module of the application. So yeah, pictorially I tried to give the suppose vehicle आता है luggage load के साथ, RFID रीडर है वो रीड करेगा और उसी प्रकार एक GSM टावर के ओके सो ये कैमरा है, कैमरा रीड करेगा एंड फ्रॉम दिस रीडर इट विल गो थ्रू द GSM टावर, इट गो टू द एप्लीकेशन. दिस एप्लीकेशन ये नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क है, विद एप्लीकेशन सर्वर रूम है, database server है and application है. So through this reader, through this GSM device, through this camera, this information about this particular bridge, this particular vehicle will go there. And this is again TPM बोलते हैं, time place movement. Each location of the vehicle is being continuously tracked at every time. Okay. This is again the major component which I already explained. I think with that I am coming. Yeah, I have done with my application, my presentation. I am open and I think it has been too long because I know that a person can be attentive only for 90 minutes, not more than that. After that his sugar level goes down, his concentration power goes down. So it's always better to complete the project, this thing in 90 minutes. Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. Thank you, sir, for this informative session. And you rightly focused on the topic and explained with it great expertise. Thank you so much. I hope I am able to understand it. I've been as simple as possible. Yeah. So now moving forward, I request all the participants to join the discussion and they can ask the question and they can raise their hands and post questions in WhatsApp group. So sir, there was a question from last session. Due to the time, we couldn't take this question. If you can answer this, if you allow me to share this question with you. Yeah, it is related. Yeah, okay. Yes, sir. So the question was whether is it possible to stop the city population up to certain limit to maintain all sustainable features with environmental conditions? Okay, is this question I'll answer in a different manner. It's like this, like I'm trying to bring the analogy. ये ऐसे ही हो गया ना कि टेक्नोलॉजी आ गया है तो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करके हम अपने आप को पीछे रख लें तो पॉसिबल है क्या? पॉपुलेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन को कम करना नहीं करना दिस इज गवर्नमेंट का जॉब है. हमें ये देखना है कि इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने शहर को कैसे बना सकते हैं. दैट शुड बी द फोकस. इट्स नॉट दैट कि हम पॉपुलेशन को कम कर दें ताकि हम ये यूज कर पाए. नो, दैट्स अ नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग. दैट्स अ विक्टिम्स माइंडसेट. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू you cannot, the thing which you cannot control, you cannot control.
and government is already there, other authorities are there to control the population. What we as a citizen should think कि अगर population increase होता है तो हम अपने technology को कैसे better ढंग से use कर पाए so that the environment is saved. That's my take. Yes, sir, that is true. So if there is any other question, kindly raise your hand, or you can post the question on WhatsApp group. Question नहीं है मतलब या तो एकदम समझ में नहीं आया तो पूरा समझ में आया. As they are typing actually. So, sir, through smart cities, we will be actually kind of will be too much depend on we will be depend on the technology. So as it can be a threat to the privacy of people also. So that is the biggest thing. How? It is like it is taking the biometric details and all for every each and every type of services. So you mean to say that the data, your fingerprints will be used for malicious use. That's what is your concern? That can be. So yes. हाँ तो then I will ask you one question. आप आधार कार्ड में कितने जगह में आपने तो thumb impression दिए हैं? Yes, that is true. And this is you are giving it to your own city, right? And the security is already there, and data is not going anywhere. It's centrally located within our city only. So that is also a question, because in future it will be too much in use our data. So yeah, that is a concern as a citizen. Yeah. Maybe with Aadhaar, yes. Because this data, because 3 years to 4 years down the line, the traditional jobs will not be there. Let's be very frank. If you are an electrical engineer, you're looking for an electrical engineer job, it will not be there. Maybe if you're talking non-technical, if he is a lawyer will be out of job for the next 3 years because software will be taking place. And similarly, all the electronic things will be AI. So we should always align, because data analytics you cannot escape. Data analytics, machine language, machine learning, artificial intelligence, these are the things of the future. So we as all the students should actually align and think on those lines. कि कैसे data को use, because आपका data तो Facebook भी use कर रहा. Facebook must be knowing what you are talking now, or what I am talking now, where I am. So we can be concerned about small things कि हाँ ये data ले रहे हैं, लेकिन Facebook, Google, everything they're tracking now. We are in the Microsoft Teams. Microsoft will know कि कहाँ पे क्या ये हो रहा है अभी. Yes. So yeah, data is the prime thing. Yes. So there is a question in WhatsApp group, sir. Can you explain difference between tier 1 and tier 2 cities? Yeah. What is the difference? मैंने उसी का मैंने बताया था कि tier 1 cities, like मैंने बोला कि metropolitans जो भी हैं, Delhi, Bombay, Chennai, right? These are all tier 1 cities where the infrastructure is full. As far as the infrastructure is concerned, job possibilities are concerned, they are all the tier 1 cities. All the facilities are available which a normal citizen needs. हम क्यों जाते हैं यहाँ से, बिलासपुर से हम क्यों भागते हैं दिल्ली, बॉम्बे जॉब्स के लिए, राइट? वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. So they are self-sufficient in most of the ways. And if you see the cities, tier 2 cities like Pune is developing. 4 साल पहले उससे नागपुर 3-4 साल पहले उतना डेवलप नहीं हुआ था. Now नागपुर has developed. It's now progressing. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इसकी IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है. Now slowly the companies are coming into these tier 2 cities. और मैं आपको ये भी बता दूं कि now it's time for Bilaspur to live up to this, because Bilaspur को एक smart city एक बूंद की तरह आया है. And now if we develop our infrastructure, if we develop our IT capabilities, companies will start coming to Bilaspur. Why not? Because 3 से 4 साल बाद Bilaspur में ही आना है, because tier 1, tier 2 cities are now getting saturated. There is absolutely no space, no water, no electricity. The next is the tier 3 cities only. So
Tier 3 cities are the one which the infrastructure उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, IT की उतनी facilities नहीं है, कंपनी में जॉब नहीं है, education is of not that level where we look forward. So when I say that I want to transform Tier 3 to Tier 2 city, what I mean to is I want to generate employment. Generating employment will come only through when the companies keep coming here. The companies will only come here when our IT infrastructure starts developing. Our other infrastructure also, the civil infrastructure also starts developing, and we have good education facilities. So अगर हमारे पास बिलासपुर में आज अगर एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, जॉब्स यहाँ पे हो, कंपनीज यहाँ पे हो, तो कोई भी बच्चा बिलासपुर से बाहर क्यों जाएगा? And that's what we have to look 3 years, 4 years down the line, and that's going to happen. It's already started happening with these IT projects which are coming, like the Smart City Project में जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है, आपका डिजिटल लाइब्रेरी है, या ICCC है, यहाँ पे कंपनियां बाहर से आ रही हैं जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, और यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. So this is what I meant by Tier 3 and Tier 2 cities. I hope I am clear. Thank you, sir. There is another question, sir. How much duration is required to transfer city from Tier 2, 3 to Tier 1 city when work actually started? We cannot give a particular time period for this transformation because there are so many dynamics available, so many variables available. Like you have the infrastructure part of it. Infrastructure में जैसे बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के अंदर में 76 प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल 76 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं. अब कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ इंप्लीमेंट होगा, किस टाइम पे इंप्लीमेंट होगा, अथॉरिटीज कैसे उस प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, तो ये सब बहुत कारण डिपेंड करता है. सो वी कांट एग्जैक्टली गिव बिकॉज देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन लाइन कि हाँ ये Tier 3 सिटी है, ये Tier 2 सिटी है, ये लाइन आपने क्रॉस कर दिया तो Tier 2 सिटी, ऐसा नहीं होता है. So it's a gradual improvement, and it again depends, totally will depend upon the administration, how fast they implement. The faster they implement the projects, the faster they will go into from Tier 3 to Tier 2 cities. Yes. Thank you, sir. There is another question from the participant. Can we implement the concept of smart cities to villages to improve the lifestyle of the people? The villages. That's what I told now, that smart city, the concept जो आया है, this is from the central government, wherein the funds are allocated by the central, 50% by the center and 55% by the state government. As of today, government state villages में smart city का concept नहीं introduce हुआ है, because smart city का concept कहीं ना कहीं cities में जहाँ implement है वहीं पे नहीं हो पाया है. But directly and indirectly, जैसे अगर बिलासपुर smart city बनता है तो कहीं ना कहीं ये गांव को भी इफेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर में देयर इज एन इंक्यूबिटी, राइट? इंक्यूबिटी मतलब द पर्सन क्रिएटिव आइडिया ऑन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जहाँ पे जैसे मैंने ई पाठशाला की बात की थी, तो ऑनलाइन एजुकेशन. नाउ दिस एजुकेशन, दिस project, if it is developed and the government likes it, now this online education can be taken to the schools also in the villages. So that's how we can connect the cities with the schools in the rural area. But as of now, government has not started any smart city project or smart village project now. Yes, thank you, sir. There is another question. In what way the smart cities is different from the concept of providing urban amenities in rural areas, which Dr. Kalam has proposed? Actually, these are two different paths. Like आपको कोई destination पहुंचना है, तो आपको वहाँ destination जाने के लिए 2-3 रास्ते होते हैं, right? So smart city एक path है जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है आपको, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू अचीव योर गोल्स और टू रीच टू योर डेस्टिनेशन फास्टर, बिकॉज इट्स गिविंग यू फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज स्मार्ट सिटी में एवरी मंथ यू हैव टू गिव अ फीडबैक, कितना प्रोजेक्ट हुआ, कितना टेंडर्स हुए हैं, कितने वर्क ऑर्डर्स इश्यू हैं. जो दूसरा जो अर्बन एमिनिटीज में, उसमें वो पुश नहीं है. हाँ, अर्बन एमिनिटी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज दे रही है, बट वो पुश एंड वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट जल्दी से हो जाए. सो ये एक मेजर डिफरेंस है. जैसे आप
अगर आपने कोई टारगेट सेट किया अपने आप के लिए, जस्ट ट्राई टू गिव एन एनालॉजी, आपने कोई टारगेट सेट किया है कि आपको 90% लेके आने अगले एग्जाम में, अगर आपके पास वो पुश नहीं होगा किसी या पेरेंट्स से, टीचर से, कहीं से, और आप अपने आप सोचोगे यार मेरे को 90% लेके आना, तो वो जोश नहीं आएगा। राइट, उसी प्रकार से कोई भी गोल हम सेट करते हैं, जब तक वो पुश नहीं हो या फाइनेंशियल या कोई हेल्प नहीं हो, तो वो टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। एंड दैट इज exactly the difference between a smart city project and the other urban amenities वाला जो आपने बोला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रोजेक्ट, that's the difference. Yes, thank you, sir. So I don't see any other questions or raised hands. Okay, great. So with that, we come to the end of this session. So thank you, sir. I want to extend my generous thanks to the resource person, and I want to thank you for your valuable time from your busy schedule to grace this occasion. And I want to thank you for sharing your graceful opinion with us. Thank you so much, sir. Thank you very much. It's always an honor and privilege to be there in my own college. Yeah, it's a great opportunity for me to be here and associated with the students and other faculty members, and also opportunity for giving me to share my knowledge. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. Vivek. Thank you so much. Thank you. And I also thank all the participants for their active participation. Thank you so much all. And we will be together at 2:30 p.m. for the next session. Thank you so much. Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you, sir.